हेलो बच्चे, हम अभी क्या किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम्स थे बोर्ड क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व कर दिया है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आप उसके थ्रू से जा सकते हो। इस वीडियो में मैं अपलोड कर रही हूँ कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है और थोड़े एक दो क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन में जो आया है वो मैं दिया है इस पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, चलो वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ओके, एंड बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव ए brief introduction about this chapter so we can brush it up. So now in coordinate geometry we know that it is drawn in the graph paper. So the vertical line is known as what? Y-axis, and the horizontal line is known as x-axis, and these two lines are intersecting at a point that is what? O, and this is known as origin. So the perpendicular line from O on a horizontal way and the vertical way. The perpendicular these are the two perpendicular line. Which one? X1 O and X, and Y O and Y dash. Okay, X dash O X dash X and Y O and Y dash. These are the two perpendicular lines which are drawn through this point O in a plane paper, that is graph, Cartesian plane या graph paper, or this O is known as what? Origin. Okay, this O is known as what? Origin. Got it? Now X dash O X is known as what? This is a horizontal line, and X dash O X dash O X, this line, this is what line? This is what? Horizontal line. Horizontal line, that is the horizontal x is known as what? Is called x axis. Okay, XOX line, that is what? That is the horizontal line. This line is known as what? X axis. Similarly, the vertical line y dash y o y dash. Okay, y o y dash. This is called what? This is called y axis. Okay, these two lines taken together, what? This horizontal line and the vertical line, these two lines we can take together, and they are known as what? Coordinate axis. Two lines are called two lines, that is what? Horizontal and vertical lines are called coordinate axis. ठीक है, coordinate axis. Now let's take a point P in the plane. Let us take a point P in this plane. So draw a perpendicular from, this is P, draw a perpendicular PM and PM and PN from P on x-axis. Draw one perpendicular, we shall draw from P on x-axis, and perpendicular from P again another perpendicular from P on y-axis. Okay, so the distance between y-axis. Okay, now let the distance between origin to x, the distance between origin to, sorry, not x, the distance from origin to, what is this coming? So the distance between from O to M, that distance, let us say x.
From here to here the distance is x. Okay, and this distance from O to, this is PM and PN are the perpendicular drawn from this. The distance from O to N, that let us say that is y. This distance is x and this distance is y. The point P has got what? The point has got, P has got what? X and y. है ना? This is x and this is y. Therefore, this point, the coordinates of point P is x and y, and these two are called, they are called ordered pair, we can say. What is ordered pair? X and y is ordered pair, yeah, coordinates, we can say. The coordinate point also, we can say that these points are coordinates. Yeah, coordinates points of P. Coordinates of point P. These are the coordinates of point P. यहाँ तक हो गया. Now, these two coordinate axes, this axis x and y axis, they divide this Euclidean plane. This is called Euclidean plane, and this plane, they divide this plane into 4 parts. Yeah, 4 regions. Each region is known as what? Quadrant. Each region is known as what? Quadrants. How many quadrants? 4 quadrants. It is divided by 4 regions, and each region is known as quadrant. The region XOY. This region is known as what? First quadrant. Okay, and X dash OY, that is known as what? Second quadrant. This is second quadrant. And X dash OY dash, X dash OY dash, this is our third quadrant. And XOY dash, this is known as the fourth quadrant. Fourth quadrant. Got it? Plane is these two lines divides the plane into 4 parts, and each region parts, and each region is known as quadrant. The first one will be this one, and second one is the next one. X dash OY is second, and X dash OY dash is third. Y dash X OY dash, like this also you can say this is fourth quadrant. Okay. Now the first quadrant has got all positive numbers. The first quadrant has got all positive. X also positive, Y also positive. These coordinates are positive. But in second quadrant, the X is negative, and Y is positive. This is our second quadrant. The coordinates of second quadrant. And the coordinates of third quadrant, what? X is negative and Y also negative. But in fourth quadrant, X is positive and Y is negative. Okay, but the coordinates of origin I didn't tell you. So इसको क्यों छोड़ दें? ये कह रहे सबको बता दिया भैया, हमको क्यों नहीं बताया? हम करके वो रो रहे. अच्छा, ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0 0. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0. ठीक है, हो गया, समझ में आ गया. अब चलेंगे हम अभी तो और क्या कोई डाउट रह गया? कोई डाउट रह गया इसमें? नाउ कोऑर्डिनेट्स हो गया. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी. अभी नेक्स्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्या है? कभी कभी आपका क्वेश्चंस में आता है. दैट्स व्हाई यू मस्ट रिमेंबर व्हाट द लेट मी राइट द क्वाड्रेंट द कोऑर्डिनेट्स of any point, the coordinates of any point on x-axis are in the form, they are in the form of x-axis are in the form of x, 0. इसका मतलब क्या है? ये है हमें x एक्सिस, और कोई भी पॉइंट, ये है हमारा x डैश, x and y, o and y dash. So the point, any point on this
any point on this you take it, that is what the point will be. What the coordinates will be? X comma 0. Here x may be 1, here x may be 2, x may be 3, 4, 5, 6, but y remains 0. x एक्सिस में y क्या होगा? 0 हो जाएगा. सिमिलरली वर्टिकल लाइन जो है दैट इज y एक्सिस में भी है द कोऑर्डिनेट्स फॉर एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? 0, 0, y. यहाँ क्या हो गया? y एक्सिस में x हमेशा 0 रहेगा. और ऑन द एक्सिस, on the axis, on the y-axis, on the x-axis, all the points, whatever is coming, there what? In y-axis, x value will be 0, and in x-axis, y value will be 0. That you must know it. You should remember. ठीक है? So, the perpendicular distance from y-axis, मतलब x अगर यहाँ 2 है तो this is the perpendicular distance from y-axis, that is known as value of x. एब्सिसा कहते हैं. और ठीक है, और ये है, अगर सोचो ये वाला अगर y से कितने दूर है? 2 यूनिट्स दूर है. और ये पॉइंट जो होता है ये है y x axis से कितने दूर है. दिस इज लेटस 3. दैट मीन्स दिस इज हाउ फार फ्रॉम द x axis. So the abscissa of every point on y axis is 0. Remember, the ordinate of every point on axis is 0. ये हमको याद रखना. और origin क्या है? 0, 0. Now, so in this chapter we are dealing what? डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या है? अगर ये है सोचो ये ऐसा है, हमारा ग्राफ ऐसा है ए और बी. इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका भी कोऑर्डिनेट x1 y1, ये है x2 y2 है. तो कोऑर्डिनेट्स मालूम है. ये कितने डिस्टेंस है? स्केल या मेजरिंग टेप या कुछ लेके मेज़र करना, ये सारे धंधा नहीं चाहिए भैया. हमको अगर कोऑर्डिनेट्स दे दोगे तो हम इसका आराम से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे. कैसा निकालोगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो अभी डिस्टेंस फार्मूला क्या है मैं लिख दूंगी, ये याद रखना. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, अंडर रूट के अंदर रहेगा. अभी लेट मी राइट दैट. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्या है? एब्सिसा. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ एब्सिसा मतलब x2 माइनस x दैट इज होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑर्डिनेट. डिस्टेंस ऑफ एब्सिसा. ठीक है, x2 का माइनस x1 कर दोगे और y2 माइनस y1 करने से हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा. तो फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट फार्मूला इज व्हाट? सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला क्या है? अगर ये A, B, this is a line segment and we know that x1, y1 and here we know x2, y2. Okay, the coordinates we know. Let the point P, this one dividing the line segment in what ratio? Let us say it is dividing in 1:2 ratio and find the coordinates of P. So that is finding the coordinates of point P by, if you know the coordinates of two points of the line segment as well the ratio, then what is the formula? तो this is let's say the P का coordinates क्या है? x and y. तो इसका x ढूंढने के लिए x इक्वल्स टू m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये बाप रे, ये कैसा हम याद रखेंगे? ये रटेंगे क्या? तो इसको अगर हम m1 कर देंगे, इसको हम
m2 कर देंगे तो x है ऊपर x ही रहेगा। हमेशा m1 के साथ x2 होगा और m2 के साथ x1 होगा। ठीक है, m1 के साथ x2 का मल्टीप्लाई करोगे, m2 के साथ x1 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, x है ऊपर x का वैल्यू ही रहेगा और नीचे क्या है, दोनों रेशियो को ऐड कर दोगे, ये हो गया। फिर y का निकालेंगे तो यहाँ भी ऐसा है, y यही रहेगा, लेकिन सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। ठीक है, m1 के साथ y2 मल्टीप्लाई कर दोगे, m2 के साथ y1 मल्टीप्लाई कर दोगे, कर देने से क्या आ जाएगा, हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और थर्ड है एक सेंट्रॉइड फॉर्मूला है। सेंट्रॉइड तो आपको मालूम है, 9th 10th में किए हैं, 9th एंड 8th में भी किए हैं। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, ये है ट्राइंगल है, अगर ये सेंट्रॉइड है इसका कोऑर्डिनेट्स निकालो तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये a b c है। तो इसका सेंट्रॉइड निकालो, इसका क्या निकालें, ये लेट इज इट x एंड y, सो दिस x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, और ये y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दैट इज y। ठीक है, ये हो गया, इसका है, समझ में आ गया। ये है हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला का x है, ये है y के लिए, ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो तुम्हारा कोर्स में है ही नहीं, ये आया हमारा 2009 और 2017। अच्छा, क्या कह रहे हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, देखा दे दिया, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। a का कोऑर्डिनेट्स दे दिया और b का कोऑर्डिनेट्स दे दिया, एंड फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस कहा। मतलब ऐसा है, दो पॉइंट्स हैं, ये P है, P का पॉइंट क्या है मालूम नहीं है, ये कहाँ है, x एक्सिस में है, दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। x एक्सिस में पॉइंट होने से क्या होगा, x विल बी रिमेन्स एज x एंड y विल बी 0 एंड दिस इज a एंड दिस इज b। a का क्या है 2,5, b का क्या है -2,9 है, तो दे आर इक्विडिस्टेंस, PA इक्वल्स टू PB इक्विडिस्टेंस कहा। सो फाइंड द value of this, he said, find a point on x axis. Which point, this is x axis, here this point is there, and what is our x is x, and what will be our y will be 0. So this point is equidistance from this thing, he said. Okay, तो अब सॉल्व करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको हम लेंगे डिस्टेंस फार्मूला में यूज़ करेंगे, है ना, डिस्टेंस फार्मूला में आराम से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे क्या है, पॉइंट, वी नो दैट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इन द फॉर्म ऑफ x, 0 है ना। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल्स टू x, 0 हो गया। अब इन गिवन में एंड द a का कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,5, दैट मीन्स x1 और y1। b का क्या है -2,9, दैट इज x2 y2। ठीक है, ये हो गया x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब गिवन क्या है, गिवन PA इक्वल्स टू PB है ना, PA इक्वल्स टू PB। सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है,
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, दैट इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। सो पी ए इक्वल्स टू पी बी कहा, दिस इज व्हाट पी ए हो गया, और इक्वल्स टू पी बी का क्या हो गया, पी बी का भी सेम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो तो बाद में करेंगे, है ना। सेम ये है, पहले इसका वैल्यूज डाल दें, ये है हम यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये लिख दिए हम। अब चलेंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी, क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो पी ए क्या है हमारा, पी ए हो जाएगा, है ना, ये वाला लेट मी राइट, x कॉमा 0 पी का हो गया, इसका हो जाएगा 2 कॉमा कितना था, 2 कॉमा माइनस 5, है ना, पी ए 2 कॉमा माइनस 5, ओके, और ये क्या -2 कॉमा 9 था, है ना। सो पी ए इक्वल्स टू पी बी, हम यहाँ तो लिख दिए, इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। तो हमारा क्या है, x माइनस अंडर रूट करेंगे पी ए का, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इक्वल्स टू पी बी का क्या होगा, x माइनस इंटू माइनस इज प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अभी इसका अंडर रूट किए, क्योंकि ये पी बी का है, ठीक है, और ये हो जाए, ये हो गया पी ए का है, ये है पी बी का है, ठीक है। तो इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। तो अब दोनों के स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, है ना, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ओके। तो क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, क्या आया देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। लेट्स सी वंस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, ठीक है। तो हम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कहा, अब स्क्वेयरिंग कर दो, है ना। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये चला गया, तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। बोथ साइड 4 है, इज देयर, काट देंगे इसको, हम थोड़ा रेड पेन में थोड़ा काटेंगे, बस काट दिया। अभी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के भी काट दिया। अब हमारा रह गया क्या है, -4x प्लस 25, दैट इक्वल्स टू 4x प्लस 81। अभी x को इधर ले आएंगे, -4x, ये प्लस 4x था, -4x हो गया, होकर 81 यहाँ का रह गया। ये कहा मैं उधर चले जाऊँ, ये प्लस वाला माइनस होकर चला गया, तो ये होगा -8x इक्वल्स टू 81 से 25 माइनस करो, 11 माइनस 5 इज 6, हियर 7 माइनस 2 इज 5, प्लस, दिस इज बिगर ना, सो प्लस 56 आया। तो -x इक्वल्स टू 56/8, 8 7s are 56, तो x इक्वल्स टू -7। तो व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है हमारा, -7, है ना, x का ये x है ना, ये
-7 कॉमा और क्या है 0 है, बस दिस इज द आंसर, राइट। ओके, समझ में आ गया आई होप, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आया हमारा 2010 में भी आया था, 2016 में भी आया था बच्चे, ठीक है। ये क्या कह रहे, देखो पढ़ो, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस, पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज पी का, लेट द लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ पी क्या है, एक्स कॉमा वाई होता है, वाई, बट इट इज गिवन क्या है, but given that what is the x coordinates of point P, x coordinates of point P is के लिए equal twice its y coordinate, y coordinates क्या है y है, ये दिया है, ठीक है। और कह रहे this is equidistant, this P is equidistant from 2 points Q and R, P का क्या है, P Q और R, Q का है 2, -5, R का है -3, 6 है, तो इसका वैल्यू निकालो कहा। लेट्स डू इन द नेक्स्ट पेज। नाउ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, दैट इज गिवन, सो यूजिंग गिवन, बट यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे given using distance formula, okay, using distance formula, this you have to write it, then only you can get full marks. What is our distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, okay, this is our distance formula, distance between the 2 points. Okay, now what is our relation is given, but x equals to 2y, isn't it? So let me keep it this, x equals to 2y. Now pq equals to pr, so what are the, this is p, the coordinates p is what, xy and q and r. What is the coordinates of q? Q coordinate 2, -5, -3, 6, 2, -5, then next is what, 3, -3, 6, -3, 6. These are the points of Q and R, the coordinates. So let me write the Q coordinates. Q coordinates equals to 2, -5, that equals to x1 and y1, okay. Then R coordinates are what, -3, 6, that is x2, y2. Now using given क्या है, given दिया है pq equals to pr. So what is our x, x minus 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5 का होल स्क्वायर, ओके, दैट इक्वल्स टू व्हाट इज आवर पी आर, पी एक्स माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिस इज आवर पी आर, है ना, पी आर का ये है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सो दिस विल, सो नाउ लेट मी राइट x minus 2 whole square plus y plus 5 whole square equals to x plus 3 whole square plus y minus 6 whole square, okay, by squaring both the sides. इसको अगर स्क्वायर कर दिए, ये इसको अगर हम स्क्वायर कर दिए, इसको भी स्क्वायर करने से ये अंडर रूट will go away, so this you get it. Now let's open this, x minus 2 whole square plus y plus 5 का
होल स्क्वायर इक्वल्स क्या है x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर. लेट्स सी y माइनस 6 का होल स्क्वायर x प्लस 3 x minus 2 y plus 3. Okay, so now what is saying, x equals to 2y, that we shall put over here. X equals to 2y, x के जगह में 2y डाल देंगे. 2y minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी x मतलब 2y है, 2y का 2y plus x, instead of x we put 2y plus 3 whole square plus y minus 6 whole square. Now 2 2s are 4y square plus 2 2s are 4 minus 2 2s are 4 4 2s are 8y plus y square plus 25 plus 5 2s are 10y, that equals to 2 2s are 4y square plus 9 plus 2 3s are 6 2s are 12y plus y square plus 36 6 2s are 12y. Now you see, so 12y यहाँ है, यहाँ 12y गया है, यहाँ 4y square y square we deduct it. Now what is remain? Nothing is remain. So now 8y is here, 10y, that means minus 8y plus 10y plus 24 plus 4, 25 plus 4 is 29, that equals to here 9 plus 45. Now this one become 2y plus 29 equals to 45. 2y equals to 45 minus 29. Okay, now this remains what? Now 2y equals to 15 minus 9 is 6, or 16. Then y equals to 16 upon 2, that is 8. So our x equals to what? 2y. So x equals to how much? 2 into 8, that is x equals to 16. What are the points? Our required coordinates of point P equals to 16, 8. 16,8. Okay, this is our, okay, so now I hope everybody has understood this question, and rest questions we shall do in the next video. So thank you very much by watching my video. See you. Bye bye.